Hello, good afternoon, student. My name is Hiral Raval. Today's date 8 December 2020. Standard 8th subject Science. Chapter number 14 Chemical Effects of Electric Current. In previous lecture, we have studied the many activities like activity 4.1, activity 4.2, activity 4.3, and we filled the table. We finished activity 14.4. Then we have studied the chemical effects of electric current by using the activity 14.6. Now, in this video, we have performed activity. Bhujo decided to test whether some fruits and vegetables also conduct electricity or not. He cut a potato into two halves and inserted the copper wires of a tester into it. Just then his mother called him and he forgot to take out the wires of the tester inserted into the potato. When he came back after half an hour, he noticed that there was a greenish blue spot on the potato around one wire, whereas there was no such spot around the other wire. Here the diagram. He was surprised with this observation and, along with Paheli, repeated this activity many times. They found that it was always the wire connected to the positive terminal which had greenish blue spot around it. They felt that this discovery was very useful because it could be used for identifying the positive terminal of a cell of a battery consulted in a box. They decided to report their finding to a चिल्ड्रन मैगजीन. ये जो है वो रिपोर्ट्स उन्होंने चिल्ड्रन मैगजीन में रखा. Remember that Bujo set out to test whether potato conduct electricity or not. What he found was that current produced a chemical effect in the potato. To him, this was very exciting. In fact, this is how science sometimes work. उनको पता चला कि साइंस कैसे वर्क करता है. You are looking for something and you discover something else. Many important discoveries have been made in this manner. बहुत सारी ऐसी डिस्कवरी है जो है वो ये मेथड से हुई है. ओके. Now our next topic 14.3 electroplating. It is very useful topic. What is electroplating? Recall that a brand new bicycle has a shiny handle bar and wheel rims. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. You might have also seen women using ornaments which appear to be made of gold. However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. In both these cases, a metal has a coating of another metal. Do you wonder how a layer of one metal can be deposited on top of another? Well, let us try doing it ourselves.
ओके, मेटल्स के ऑर्नामेंट्स पे कोटेशन ऊपर कोटेड किया होता है। सपोज हम सिल्वर पे गोल्ड का कोटेड कर सकते हैं, गोल्ड पे सिल्वर का कोटेड कर सकते हैं। कोई भी लेयर्स, थीन लेयर्स का कोई और मेटल पे कोटिंग होना है ना, वो हुआ कोटेशन। वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो मेथड है उससे पॉसिबल है। एक्टिविटी 14.7 we will need copper sulfide and two copper plates of size around 10 centimeter into 4 centimeter. Take 250 milli of distilled water in a clean and dry beaker. Dissolve 2 teaspoonfuls of copper sulfate in it. Add a few drops of dilute sulfuric acid to copper sulfate solution to make it more conducting. क्लीन कोपर प्लेट्स विथ सैंड पेपर, सैंड पेपर से हमें कोपर प्लेट्स को एकदम क्लीन कर देना है। नाउ रिंस them with water and dry them. Connect the copper plate to the terminals of a battery and immerse them in copper sulfate solutions. उसको हमें copper sulfate solution में डालना है। ओके, here the activity and diagram shows that copper plate, there are 2 copper plates in it and solutions of copper sulfate like blue color solutions. Figure 14.7, a simple circuit showing electroplating. Allow the current to pass for about 15 minutes. Now remove the electrodes from the solution. 15 minutes तक हमें ये एक्टिविटी करनी है। देन आफ्टर हमें उसके अंदर से remove the electrodes from the solution and look at them carefully. Do you find any difference in any one of them? Do you find a coating over it? क्या आपको ऊपर कोटिंग दिखाई दिया? What color is the coating? कोटिंग का जो है वो कलर क्या है? Note down the terminal of the battery with which this electrode is connected. हमें टर्मिनल्स भी नोट करने हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल. After doing the electroplating activity, Paheli interchanged the electrodes and repeated these activities. ये एक्टिविटी हो गई. ओके स्टूडेंट, एक बार फिर पहेली ने क्या किया, ये दोनों जो प्लेट्स है उसको इंटरचेंज कर दिया. व्हाट डू यू थिंक शी वुड ऑब्जर्व दिस टाइम? ये टाइम उसने क्या ऑब्जर्व किया? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, copper sulfate dissociates into copper and sulfate. The free copper gets drawn to the electrode connected to the negative terminal of the battery and gets deposited on it. But what about the loss of copper from the solutions? इसमें क्या होगा, कॉपर का जो है वो जो लॉस कॉपर हुआ वो कहाँ पे गया? तो वो तो सॉल्यूशंस के अंदर चला जाता है ना. फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एन इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व हो जाता है. दस द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सॉल्यूशन इज रिस्टोर्ड एंड द प्रोसेस कीप्स गोइंग. प्रोसेस जो होती है वो चालू रहती है. दिस मीन्स दैट कॉपर गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू द अदर. कॉपर जो है वो ट्रांसफर्ड हो जाता है वन इलेक्ट्रोड टू द अदर. Now Bujo has questions in his mind. Bujo could get only one copper plate. So he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in place of the copper plate.
which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod. कार्बन रोड के ऊपर उसने कोटिंग कर दी है. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस हुई. ओके. The process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Okay. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. Chemical effect of electric current की ये most popular जो है वो method है. Electroplating is a very useful process. It is widely used in industry for coating metal objects with a thin layer of a different metal. The layer of metal deposited has some desired property. Which the metal of the object lacks. For example, chromium plating is done on many objects such as car parts, bath taps, kitchen gas burners, bicycle handlebars, wheel rims, and many others. Chromium has a shiny appearance. It does not corrode. क्रोमियम जो है वो corrode नहीं होता है. It resists scratches. उसके ऊपर scratches होते हैं. However, chromium is expensive and it may not be economical to make the whole object out of chromium. So, the object is made from a cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. Jewelry makes electroplate. यहाँ पे बहुत सारे हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट दिए हैं जिसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जो प्रोसेस है वो हो रही है. Some electroplated objects, silver and gold on less expensive metals. These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. ये जो है वो एक्सपेंसिव कम एक्सपेंसिव होते हैं जिस पे कोटेशन किया होता है ऑर्नामेंट्स का. जैसे इमिटेशन जो ज्वेलरीज होती है उसमें कोटिंग किया होता है सिल्वर और गोल्ड का, तो वो जो है वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, चीप होते हैं. टीन कैन यूज for storing food are made by electroplating tin onto iron. Tin is less reactive than iron. Thus, food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled. Iron is used in bridges and automobiles to provide strength. आयरन जो होता है वो ब्रिजेस और ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. So, a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust. In the electroplating,
factories is disposal of the used conducting solution is a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. Okay, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रीज है जहाँ पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है वो किया जाता है. तो इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजेबल ऑफ द यूज्ड कंडक्टिंग सॉल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न्स. डिस्पोजल्स जो है वो मेटल्स का हम डिस्पोजेबल कहाँ पे करें, वो जो है वो एक बड़ा ही मेजर कंसर्न्स है. इट इज़ अ पॉल्यूटिंग वेस्ट एंड देयर आर स्पेसिफिक डिस्पोजल guidelines to protect. So in the electroplating factories, the disposal of the used conducting solutions is a major concern. It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment. Here the keywords: electrode, electroplating, good conductor, lead, LED or poor conductor. What do you have learned? Some liquids are good conductors of electricity and some are poor conductors. Most liquids that conduct electricity are solution of acids, bases and salts. The passage of an electric current through a conducting liquid causes chemical reaction. The resulting effects are called chemical effects of electric current. The process of depositing layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. Okay student, so अभी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं. Here the exercise of this chapter number 14, chemical equations, chemical effects of electric current. सबसे पहले fill in the blanks है. Okay, most liquids that conduct electricity by solution of acid, bases and salts. Okay, then the passage of an electric current through a solution causes chemical effects. Then if you pass current through copper sulfate solution, copper gets deposited on the plate connected to the negative terminal. Then the process of depositing a layer of any desired metal on another metal by means of electricity is called electroplating. Then this is question answer. Okay, question 2. When the free end of tester are dipped into a solution, the magnetic needle shows deflection. Can you explain the reason? इसका रीज़न हमें बताना है. The deflection in the compass needle shows the current is flowing through the wounded wire and hence through the circuit. The circuit is complete since free ends of the testers are dipped in a solution. The solution is certainly a conducting solution. ये जो solution है वो conducting solution है. This is the reason
वाई द कंपास नीडल शोस अ रिफ्लेक्शन, यही जो है उसका रीज़न है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में तो जो है वो डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करना है। लिक्विड्स लाइक लेमन जूस, सॉल्ट वाटर एंड वेजिटेबल ऑयल, उसका यूज़ करके किया है। देन क्वेश्चन 4 में ये बड़ा आंसर है, मीन्स कि पूरा एक्सपेरिमेंट है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 जो है पूरे अलग अलग सर्कमस्टेंसेस दिए हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है? तो नो, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज बिकॉज प्योर वाटर इज डिवॉइड ऑफ एनी सॉल्ट्स, उसमें कोई सॉल्ट्स नहीं होते। प्योर वाटर इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट। प्योर वाटर में कब इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है? जब हम पिंच ऑफ सॉल्ट उसमें ऐड करें तब। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे आपको ऐसे ज़्यादा वो है वो नहीं दिखते हैं, मीन्स के राइटिंग छोटे हैं, तो मैं उसकी PDF बना के आपको सेंड कर दूँगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।